Depending only on a degree in 2026 is risky. Yes, I am a medical student and I am saying this because it delays your earning power. And time is the one thing middle class students cannot afford to waste, as I have taken 3 years drop. 3 years, 3 whole years. That's a big deal. My peers were earning and they were financially independent. Some were already helping their families. And in medicine, अर्निंग कम्स लेट, वेरी लेट एक्चुअली. अगर आपके घर में भी कोई मेडिकल फील्ड में है तो आप इस बात से रिलेट कर पाओगे. एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट वेटिंग टिल 28 और 30 इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन एंड इट्स नॉट एक्चुअली अ चॉइस. ठीक है. सो बट इट मीन्स डिपेंडिंग लॉन्गर. It means dealing responsibilities and watching others move ahead while you are still preparing. So that's when I realized something important. A degree gives you a path, but skills give you leverage. And leverage changes timelines. I didn't want my first earning experience to begin at 30, so I started learning digital skills. Not to quit medicine, not to disrespect my degree. I would never do that, obviously. So basically, I learned 3 skills. One is Canva designing, affiliate marketing, and then there is content creation, जो मैं अभी कर रही हूँ. Okay. तो लेकिन क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरे घर में कोई ऐसा मार्केटिंग और इस फील्ड में नहीं है, तो आई क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इज दिस रियल, इज दिस सस्टेनेबल, और इज इट जस्ट अनदर ऑनलाइन इल्यूजन गोइंग ऑन. But instead of judging it from outside, I tested it. I learned properly. Okay, I applied. I failed horribly. लेकिन 20s का यही एक फ़ायदा है कि आप कई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल होते हो, बट उन 10 में से कोई एक ना एक चीज़ तो चली जाती है. So in 2026, depending on only on one income path is risky. Not because degrees are useless, I would never say that, but because inflation doesn't wait, expenses don't wait. ठीक है. अगर आप YouTube पे सर्च करके आए हो कि ऑनलाइन कैसे अर्न करा जाए, Pinterest से लोग कैसे अर्न कर रहे हैं, आप इस चीज़ के बारे में सर्च करने यहाँ पे आए हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेंसेस आपकी सैलरी से ज़्यादा ऊपर जा रही है. ठीक है. तो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ना, दे डोंट लैक टैलेंट. टैलेंट तो है, सबके पास है, मैं तो कहती हूँ. We lack leverage, and a leverage is built through skills. If your degree is your foundation, digital skills can be a support system. You don't need to choose one over the other. Trust me, you can build both. मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग, ये सारी चीज़ें मैं खुद कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है आप भी कर ही सकते हो. ओके, बैक टू दैट स्टोरी कि तुम क्या समझ रही हो खुद को. माय मदर सेड, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग मी, इट मेड मी थिंक डिफरेंटली. It made me realize I don't need to prove myself emotionally. I need to prepare myself financially because it was now high time. So, if you're a student, especially from middle class background, don't wait until you're fully ready to start earning experience. Nobody is fully ready. You will never be fully ready. You have to go there and just do it. You have to learn and then, give it your all. Learn one skill alongside your degrees. Build something slowly. Give yourself options. I'm documenting what I'm learning step by step. No hype, no fake promises, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो आप ये बात अच्छे से समझ ही सकते हो. Just practical clarity. If that helps you at all, subscribe. We will build leverage together.